Vigra IAS, and today we are going to be covering our weekly current affairs compilation that is from the date 6th June to 12th of June. So the first piece of news that we are going to be covering is about the impact of stagflation on markets. So what is the issue? So authorities worldwide are trying to formulate appropriate set of policies to ensure that the current inflation is cooled without triggering a recession. अब stagflation होता क्या है? तो stagflation जो है it is characterized by slow economic growth, relatively high unemployment, and at the same time accompanied by rising prices, that is inflation. So ये जो high unemployment है इसको इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कहते हैं और ये जो राइजिंग प्राइस है दैट इज द इन्फ्लेशन. तो ये यहीं से ये टर्म निकल के आया है. Stagflation was first recognized during 1970s when many developed economies experienced rapid inflation and high unemployment as a result of oil shock. Stagflation led to the emergence of the misery index, which is the simple sum of the inflation rate and unemployment rate. आपने सुना भी होगा Phillips curve के बारे में, and it states that the inflation and the unemployment have an inverse relationship. What has sparked the latest concerns about the stagflation? COVID-19 है ना, physical and monetary measures, यूक्रेन का वॉर सबसे बड़ा तो अभी रिसेंटली यही इशू चल रहा है. ठीक है. कोविड-19 का जो ब्रेकडाउन आउटब्रेक हुआ था of the pandemic and the curbs imposed to contain the spread of virus caused the major recent economic slowdown. Fiscal and monetary measures to address the downturn, including the substantial increase in liquidity in most of the advanced economies, fueled upsurge in the inflation. और recent जो cause है सबसे बड़ा, the ongoing war in Ukraine following Russia's invasion and the conquest Western sanctions on Moscow has caused a fresh supply shock. India's marine exports. So the statement by the Union Minister of Commerce and Industry Shri Piyush Goyal at the Marine Products Export Development Authority, कोची. ठीक है. डिटेल्स ये है कि इन्होंने ये कुछ डिटेल्स दी थी अबाउट द मरीन एक्सपोर्ट्स, और वो ये है कि जो मिनिस्टर हैं ही हाईलाइटेड इंडियाज एम्स टू डबल द मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू 1 लाख करोड़ फ्रॉम द प्रेजेंट ऑफ 50,000 करोड़ विद इन नेक्स्ट 5 years. ठीक है. Another major aspect would be the emphasis on sustainable fishing, ensuring quality and variety, promoting of coastal shipping and aquaculture, and supporting the entire fisheries ecosystem. In this respect, it becomes extremely important to educate, assist and encourage fishermen to follow sustainable measures in fishing and also to preserve the quality of the catch so that it will fetch better returns. एक ये भी है कि India has already finalized FTAs in with UAE and Australia, है ना, जहाँ पे नेसेसरी मार्केट एक्सेस हमें मिल जाएगा और हमारे जो एक्सपोर्टिंग फिशरमैन्स हैं हमारी कंट्री के उनको भी अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. ग्लोबल फूड क्राइसिस. तो भाई ग्लोबल फूड प्राइसेस जो हैं दे आर ऑन द राइज. यूक्रेन और उसके जो allies हैं accuse Russia of weaponizing food, saying that its blockade of Ukraine's Black Sea ports is the primary reasons for the rising prices, while Moscow has blamed Western sanctions for the crisis. Before the Russian invasion of Ukraine started, Ukraine had the capacity to export up to 6 million tons of wheat, barley and maize a month, है ना, mainly through its ports in the Black Sea and Sea of Azov. ये थोड़ी geographically भी important जगह है तो थोड़ा इनको ध्यान में रखिएगा. Now several Ukrainian port cities are under Russian control and have thus brought export from Ukraine to a grinding halt.
While Russia's food and fertilizer sectors are not directly targeting by Western sanctions, and the sanctions on its financial sector, which makes payments difficult for Russia, has complicated its exports. है ना? Now, both UN and Turkey have initiated talks with Russia to find out a solution to resume जो exporting both Ukrainian and Russian grain, but no breakthrough has been achieved so far. अब ये फूड क्राइसिस जो है ये कितनी सीरियस है? So currently, many countries are facing food insecurity even before Russia's war. Climate shocks, है ना, conflict and the COVID-19 pandemic, ठीक है, has disrupted supply chain, pumping up prices of both the commodities and crop. और ये जो war है यूक्रेन रशिया का, इसने सिचुएशन को और खराब कर दिया है. So as of June 1, 2022, the agriculture prices index was 40% higher compared to January 2021, according to World Bank. और जो मेज और वीट के प्राइसेस हैं वो 42 एंड 60% रिस्पेक्टिवली बढ़ गए हैं, है ना, अगर आप जो पिछले साल जनवरी 2021 से अगर आप कंपेयर करें तो. हाउ इम्पोर्टेंट आर रशिया एंड यूक्रेन फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी? तो देखिए ये जो दोनों देश हैं रशिया और यूक्रेन, दे बोथ टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स व्हीट सप्लाई, है ना. Wheat is a staple food for at least 35% of the world's population, and as per the estimates of the UN Food and Agriculture, ये जो FAO है इनके ये estimates हैं, ठीक है. And besides wheat, Ukraine is the world 8th largest producer and 4th largest exporter of corn, accounting for 16% of global exports. अब आगे क्या हो सकता है? तो रशिया जो है has suggested that it would resume exports from its ports on the Sea of Azov that it controls, है ना, and it would open a corridor for commercial vessels in Black Sea if Ukraine remains the ports its control, है ना. And only the practical solution to take Ukrainian grains to the global market is to open the Black Sea routes. We will have to see what they have come up with. Revenue deficit grants. The Development of Expenditure Ministry of Finance has recently released the third monthly installment of Post-Devolution Revenue Deficit, that is PDRD grants of 14 states. ये बेसिकली मुद्दा ये है, मतलब पूरी डिटेल्स यही है इसकी, कि जो ग्रांट्स हैं दे आर रिलीज टू द स्टेट्स टू मीट अप द गैप रेवेन्यू इन द revenue accounts of the states post devolution, है ना. The revenue deficit grants are released based on the recommendations of the Finance Commission, which analyzes the gap between the assessment of the revenue and the expenditure of revenue. ठीक है, ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, इसको of the state after considering the assessed devolution. ये जो पोस्ट एवोल्यूशन रेवेन्यू ग्रांट्स है जो स्टेट प्रोवाइड करता है, स्टेट्स को मिलती हैं, आर अंडर आर्टिकल 275 of the Constitution. And the 15th Finance Commission has recommended post-evolution revenue deficit grants to 14 states for the financial year 2022 and 23. अभी कौन से 4 states हैं ये थोड़ा सा देख सकते हैं. खीर भवानी टेम्पल काफी न्यूज में भी रहा. तो कश्मीरी हिंदूज locally known as the Pandits were celebrate the Zestha Ashtami at the Mata Kheer Bhavani temple at Tulumala in central Kashmir, Ganderbal. अभी जो टेम्पल है it is dedicated to goddess Ragna Devi and situated to 30 kilometers from Srinagar city, है ना. Temple gets its name from the kheer or milk or rice pudding that pilgrims pour into the spring inside the temple complex as an offering to the goddess. हर साल यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है इस टेम्पल में. इस मेले को जो है खीर भवानी का मेला भी कहा जाता है. इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ हिंदूज इन कश्मीर आफ्टर द एनुअल अमरनाथ यात्रा. स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये अभी रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला है. तो ये जो 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है अभी जो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है, ये द इंडेक्स मेजर्स द फूड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द
Indian states. Key points क्या रहे इसके? तो among the larger states, Tamil Nadu topped the index, followed by Gujarat and Maharashtra. Among the smaller states, Goa stood first. Union territories में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टॉप पे रहे, followed by Delhi and Chandigarh. ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है? तो ये इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006. It is a statutory body that works under the Ministry of Health and Family Welfare. Basically, this agency is responsible for protecting and promoting public health through the regulation and supervision of the food. ये इनकी कुछ powers and responsibilities है कि ये देखिए formulates the regulations to lay down food safety standards. It prepares guidelines है ना for the accreditation of the laboratories for food testing. It provides scientific advice and technical support to the government. Data collect करती हैं, awareness फैलाते हैं, ना science based standards को lay down करते हैं for articles on food. They also regulate the manufacturing, storage, contribution and distribution, import and sale of food to promote food safety. चेयरमैन जो है वो इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है. 6 रीजनल ऑफिसेज हैं इनके, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन एंड चेन्नई. QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023. ये जो लीडिंग ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है QS, उन्होंने अपनी रिलीज की है एक रिपोर्ट. ये है 19th एडिशन ऑफ द one of the most consulted international university rankings. It is the only international ranking to have received the approval of International Ranking Expert Group, that is IREG. So, how are the institutions ranked? तो QS जो है, they use 6 indicators to compile the ranking. पहला है academic reputation, दूसरा है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फिर आता है साइटेशन पर फैकल्टी, फिर आता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, फिर आता है इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो एंड देन इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो. Performance of Indian institutions. So the latest edition features 41 Indian universities, of which 12 improved their positions and 12 remained stable and 10 declined and 7 are now new entries. The IISc ranks 155th globally and is the global leader in the citations per faculty. ठीक है, जो इंडिकेटर है एक ये वाला CPF वाला, इसमें global leader है, which QS uses to evaluate the impact of research produced by the universities. IISc जो है ये fastest rising South Asian university है among the top 200 universities in the QS ranking and having climbed 31 places year on year. IIT Bombay जो है, which was the top Indian university in QS World University ranking of the previous edition, is the second best Indian institution this time and climbed 5 places globally to reach 172 rank. Jindal Global University जो है वो top ranked private institute है in India. Par Tapi Narmada project. So PM Modi is all set to inaugurate the Astral project that will provide tap water to 4.50 lakh people living in 174 tribal villages and 1028 hamlets on the hill of the Valsad district in Gujarat. ये जो है ये जो प्रोजेक्ट है इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं. तो पार तापी नर्मदा river link project in South Gujarat was scrapped after strong protests by tribal communities of the 3 districts in the region. Project थोड़ा देख लें कि envisioned under the 1980 National Perspective Plan. The project proposes to transfer river water from the surplus regions of the Western Ghat to the deficit regions of the Saurashtra and Kutch. ये 3 रिवर्स को लिंक करने वाला है, एक तो पार, तापी एंड नर्मदा. जो पार रिवर है it originates from Nashik in Maharashtra and flowing through Valsad. तापी जो है ये महाराष्ट्र और सूरत दोनों में बहती है गुजरात में.
सापुतारा से ये बहती है, और नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, एंड इट फ्लोइंग थ्रू द महाराष्ट्र, भरूच एंड नर्मदा डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात। इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? तो जो सरप्लस वाटर प्रपोज टू बी डाइवर्टेड थ्रू द एस्टिमेटेड ऑफ 10,000 करोड़ पारतापी, ये प्राइस है इस प्रोजेक्ट का। ये जो प्रोजेक्ट है इज एक्सपेक्टेड टू इरिगेट एन एरिया of 2,32,075 hectares, of which 61,190 hectares is en route to the Link Canal. Why is this project being opposed? So, according to the report by the NWDA, about जो 6,065 hectares का जो land है will be submerged due to the proposed reservoirs। तो इसलिए जो है ये काफ़ी सारी families को और villages को affect करने वाला है। That is why डिस्प्लेसमेंट के डर से या जो भी है, ये इतने इसके विरुद्ध जो है लोग खड़े हुए थे। राज्यसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस जो हैं अभी रिसेंटली रखे गए थे फॉर 57 सीट्स। 41 out of 57 candidates have been elected unopposed in Rajya Sabha elections, and on 10th June election was conducted for 16 remaining seats। राज्यसभा जो है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952 और 54 में राज्यसभा को अनाउंस कर दिया गया था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे उसे राज्यसभा कहा जाएगा, और राधा कृष्णन जी जो है उन्हें फर्स्ट चेयरमैन इसका अपॉइंट किया गया था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इसकी 250, आउट ऑफ विच 230 आर टू बी इलेक्टेड एंड 12 टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी करंटली स्ट्रेंथ जो है इसकी 245 है, आउट ऑफ विच 233 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड। Rajya Sabha is not subject to dissolution, and 1/3 of its members retire every second year। 6 साल का टेन्योर होता है, but a member elected in a by-election serves for the remainder of its term। इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि मेंबर्स जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years। ये थोड़ा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में है कि भाई मेंबर्स जो है वो कैसे इलेक्ट होते हैं। तो दे आर इलेक्टेड बाय द elected members of assemblies of states and union territories in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। जैसे कि मैंने बताया 12 जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमंग्स पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विसेज। आर्टिकल 105 के अंदर जो है मेंबर्स जो हैं वो उनको सर्टेन पावर्स और प्रिविलेजेस दिए गए हैं। And if any question arises about the disqualification under the 10th schedule, the question is referred to the chairman and his decision is final। कुछ स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा की, वो ये हैं कि जो it empowers parliament to make laws in respect of any matter enumerated in the state list in the national interest by adopting a resolution to this effect। ये दिया है आर्टिकल 249 में। आर्टिकल 312 जो कहता है क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 352, 56 और 60 टॉक्स अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, कि उसके जो अप्रूवल है उसके बारे में कहता है। फिर जो जॉइंट सिटिंग है जो हाउसेस की फॉर रिजॉल्विंग द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, टिल नाउ हैज ओनली 3 जॉइंट सिटिंग्स सो फार। थोड़ी वर्किंग है राज्यसभा की, आप देख सकते हैं। Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity। So India needs to be cautious and have clarity on the US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity। Recently, in Quad Summit, in United States announced the establishment of Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity with other partner countries। Within days of its launch, IPEF expanded its membership to the Pacific Island states, with Fiji joining the initiative। At its launch, the IPEF was proposed as an elaborate framework of rules covering 4 pillars, namely fair, resilient trade, uh,
supply chain resiliency, clean energy decarbonization, and tax and anti-corruption. Areas of concern on IPRs. So, under the Fair and Resilient Trade pillar, the initiative aims to develop high standard worker centered commitments covering labor rights and environment and climate, etc. Notable exclusions from its list is intellectual property rights that have generally been at the heart of the US's economic engagements with its partner countries. Import tariffs, and the primary objective of this IPEF is to ensure a high degree of regulatory coherence and to make market access contingent upon realization of regulatory standards. The standards and regulations is the most development countries often create discriminatory barriers to trade, and overcoming these barriers is usually beyond the capacities, both institutional and otherwise, of lesser developed countries. Data portability. So, control over data, the driver of the digital economy, will increasingly determine the dynamics of the economics, and hence the issue of data portability assumes critical importance. For India to watch, key on this issue of the data localization, the government of India has not yet taken a clear position, which I think they should. In 2019, in the draft national e-commerce policy, wherein it had backed restrictions on the cross-border data flows, the key challenges for India is to sustain this diametrically opposite view to an uncompromising position of the US on data localization. आगे किया क्या जा सकता है भाई, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि कॉमन स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किया जाए. Such standards will cover labor rights, environmental standards, protection of intellectual property rights. Now for addressing tech related issues, जैसे कि clear framework on data flow, कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसके पास रहेगा, कितनी देर तक रहेगा, you know. Balancing self-reliance and globalization, India has always expressed its desire to attract foreign investments and become part of the global supply chains. It is time to utilize the opportunities provided under IPEF with carefully framed policies. Manas National Park, तो असम राइनो estimation इसलिए था ये न्यूज़ में. ये जो है, the current rhino population in the park was estimated at 40, and the park's rhinos have a male-female sex ratio of 1:1, arrived at without considering 10 calves and 5 subadults. ठीक है. The one-horned rhinos in Manas National Park have a age structure pyramid indicating higher life expectancy and significant growth in the population. So there is no wider representation of the calves and subadults to sustain the population structure. The population pyramid for calves is clearly an indicative of a low birth rate, but it is also suggestive of a lower death rate. Okay? Which means that there is a higher life expectancy, but such a population may suffer losses if not supplemented through translocations, the report warned. So counting, if you count the limitations, the total count or direct count method adopted for the population estimation in Manas has a few limitations. So वो क्या है कि भाई देखिए total count जो है is generally used when a single species is targeted to be counted in a well-defined या specific area, है ना? This method assumes the detection probability to be 1. And limitations of this method, it also includes undercounting, है ना? As the assumption of the detection probability is 1 is unrealistic, and especially if the population closure cannot be established satisfactorily within a small area of 10 से 20 square kilometer. मानस नेशनल पार्क जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, और एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. ये हिमालयन फुटहिल्स में सिचुएटेड है इन असम एंड इज contiguous with the रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान. ठीक है. The name of the park is originated from the Manas river. इस पार्क की सिग्निफिकेंस यही है कि इट इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एज द आसाम रूफ्ड टर्टल, हिस्पेड हेयर एंड गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉक. और इसमें जो वाइल्ड वाटर बफेलो है कि इसके लिए भी काफी फेमस है.
Prevention of misleading advertisements and endorsements for misleading advertisements 2022. So, guidelines for prevention of misleading advertisements and endorsements for misleading advertisements 2022 has been notified by the Department of Consumer Affairs. ये जो guidelines है, they provide for regulation of bait-free claims and children-targeted advertisements and prohibit surrogate advertisements. प्रोविजंस इसके ये हैं कि भाई जो जंक फूड के एडवर्टीजमेंट्स है ना, इंक्लूडिंग चिप्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड सच अदर स्नैक्स एंड ड्रिंक्स shall not be advertised during a program meant for children or on a channel meant exclusively for children. ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है, अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया तो काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा. In states, an advertisement of any goods, product or services that addresses or target children shall not be such as to develop negative body image in children, give any impression that such goods, products or services are better than the natural or traditional food that children may be consuming, or it states any advertisement that offers promotional gifts to persuade children to buy goods, products or services without any necessity or promotes illogical consumerism shall be discouraged. है ना, ये भी कहता है कि भाई इंडियन सिटीजन्स जो हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें. ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है. Protest grows in Kerala against Supreme Court's directives on ESZs. So जो protest है is mounting in hilly regions of Kerala against the Supreme Court का जो direction आया उसमें that every protected forest tract and wildlife sanctuary must have an eco-sensitive zone of 1 kilometer from its boundaries. ठीक है. Political parties and farmers outfits in Kerala has been demanding that all human settlements be exempted from these eco-sensitive zones. तो बैकग्राउंड ये है कि 3 जजेस की जो बेंच थी ऑफ एन एपेक्स कोर्ट, दे डायरेक्टेड all states to leave a mandatory eco-sensitive zone of 1 kilometer from the boundaries. है ना? The court was considering public interest litigation for the protection of the forest lands in Tamil Nadu. फिर बाद में ये हुआ कि जो स्कोप है इस पिटिशन का, इट वाज enlarged and to protect such natural resources throughout the country. अब इसके साथ कंसर्न्स क्या क्या जुड़े हैं, तो जो टोटल एक्सटेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का इन केरला इज 8 लाख एकर्स, है ना. एंड इफ 1 किलोमीटर ऑफ द ये जो इकोसिस्टम जोन्स हैं इनका इज डिमार्केटेड फ्रॉम देयर बाउंड्रीज, तो अराउंड 4 लाख एकर्स का जो एरिया है ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स वो सब इसके अंदर आ जाएगा, इंक्लूडिंग फार्म लैंड्स एंड वुड कम विद इन अ परव्यू. ये इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं, तो दे आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज within 10 kilometers around protected areas, national parks and wildlife sanctuaries. They are notified by Ministry of EFCC, Government of India under Environment Protection Act. In case of places with sensitive corridors, an area beyond 10 kilometer within width can also be included in this eco-sensitive zone. इसमें एक्टिविटीज़ जो है कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ रेगुलेटेड हैं, कुछ परमिटेड हैं. प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, इंडस्ट्रीज, ये सब प्रोहिबिटेड है. रेगुलेटेड भैया आप देखिए फेलिंग ऑफ द ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होटल रिजॉर्ट्स वगैरह, थोड़ा पानी का थोड़ा सा कमर्शियल यूज़, ये सब. और परमिटेड एक्टिविटीज़ में थोड़ी ये जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सब आती है. पीएम गति शक्ति ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है, तो इस पे आप थोड़ा सा जो भी न्यूज़ आती है तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा. ये न्यूज़ है पीआईबी से. तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल हेल्प अचीव इंडियाज एम टू $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसमें अचीव करने में हेल्प करने वाला है, ये कहना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का. पीएम गति शक्ति वैसे तो हम देखते रहते हैं, पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि envisages a centralized portal to unite the infrastructural initiatives planned and initiated by as many as 16 central ministries and departments.
ये कैंपेन है टू लैंड मोर स्पीड, दैट इज गति, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, एंड पावर, दैट इज शक्ति, टू projects by connecting all concerned departments on one platform. ये pillars हैं इस स्कीम के, ये थोड़ा आप देख सकते हैं. So that is all for today. Thank you for watching.